I've also had that transition where my resolutions have now just translated into delusions. So I no longer call them resolutions. I just call them delusions because that's what New they Year are. delusions, I like that. हम लोगों पे भी बहुत प्रेशर होता है कि अब हमने to keep up with times we have to celebrate even if I decide to just stay in and relax with my family and friends. जब मैं अपना Instagram खोलती हूँ and I look at that one story, or actually not one, thousands of stories of people just having the best time of their lives on New Year's. Someone told me that they always go to Dubai for New Year's and I was like, what is this level of posh? Boys हमेशा बाहर बीलियां मार रहे होते हैं, बच्चे वो पाम वाले होते हैं. बाजे बंद करवाओ इन बाजों को. ये जो न्यू ईयर्स और 14 अगस्त पे जो ये बाजे आ जाते हैं ना, these should be really bad. First week of January के अंदर सबसे ज़्यादा gym memberships होती हैं. Yeah, gyms are filled with people. 1st January से लेके I think एक हफ्ते तक gyms are full packed. Yeah. Guys, do tell us what New Year resolutions do you have? Comment down below. Yeah. And what are the stupidest resolutions that you've heard from people? क्या आप भी न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाते हैं knowing कि आपने घंटा फॉलो नहीं करना? Is New Year's even a big deal in Pakistan or is it just social pressure? और हमेशा 31 दिसंबर को किसी न किसी की शादी क्यों हो रही होती है? हम क्यों प्लान्स बनाते हैं जब हमें पता ही है कि पूरी रात काउच पे बैठ के ही गुजरनी है? ये लोग हमेशा न्यू ईयर न्यू मी की स्टोरी क्यों लगाते हैं नोइंग फुल वेल कि उन्होंने कुछ नहीं चेंज करना अपने बारे में? हर कोई सोशल मीडिया पे न्यू ईयर्स नाइट पे फिलोसोफर क्यों बन जाता है? और लोग हमेशा इतना लंबा एसे क्यों लिखते हैं अपने ईयर के राउंड अप पे एज इफ anyone is going to read that except themselves. So Aisha, how are your New Year plans like? I'm a loser. I do not have New Year plans, bhai. I've never had New Year plans. I've always seen लोग की stories जो like countdowns चल रहे होते हैं, लोग parties पे गए होते हैं, but I am a loser. मैं I think ज़िंदगी में एक या दो दफ़ा New Year plans पे गई हूँ and even then it's like 11 PM मेरा bed time होता है तो 12 तक जागना is very difficult for me. Wow. But I've always stayed in and just chilled. जब मैं छोटी होती थी तो I used to think कि oh you know ये बड़े cool लोग हैं जो New Year plans मनाते हैं and stuff or have like parties to go to or hanging out with their friends. मुझे तो मेरी अम्मा ने कभी इजाज़त नहीं दी भाई कि 12 बजे तक रहो तुम कहीं. तो हमारा New Year तो घर पे ही गुजरता था हमेशा. Nice. I think that's the best way to spend New Year's night. I'm like the delusional queen for New Year's. I always प्लान कि मैं अपने न्यू ईयर्स के ऊपर बहुत ही कोई अमेजिंग पार्टी अटेंड करूँगी, फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करूँगी, वील बी आउट, विल बी ड्रेस्ड अप अ सर्टेन वे, यू नो, द वे दैट दे शो इट इन हॉलीवुड मूवीज, हाउ न्यू ईयर्स नाइट इज सपोज टू बी, बट इट जस्ट नेवर टर्न्स आउट लाइक दैट. आई थिंक जब वो दिन आता है यू जस्ट फील सो अंडर प्रेशर एंड एग्जॉस्टेड एंड प्लस हमारी सड़कों पे इतना रश हो जाता है यार, मतलब इट्स always the traffic is jam packed, everybody's out, and then you just don't want to do anything. And I think the best New Year's night that I've spent has been inside at home with my family or just having a few friends over and बस हम अपनी आपस में chilling करते हैं. And I think that's the sweetest thing to start the year with your close ones. Yeah, that is true. Yeah. Boys हमेशा बाहर बीलियां मार रहे होते हैं, बच्चे वो पाम वाले वो यार बाजे बजा रहे होते हैं. बाजे बंद करवाओ इन बाजों को. ये जो न्यू ईयर्स और 14 अगस्त पे जो ये बाजे आ जाते हैं ना, these should be really bad. Yeah, but I remember जब हम छोटे होते थे तो fireworks वगैरह होते थे ज़्यादा. अब पता नहीं मेरे आसपास तो एटलीस्ट नहीं होते, कहीं दूर से आवाज़ आ रही होती है. बट fireworks, I really think कि fireworks बड़े cute लगते हैं New Year's पे. Yeah, they're really cute. And I think New Year's की मेरी सबसे अच्छी कोर जो मेमोरी है from my childhood is New Year's in चाहे कुछ भी हो, चाहे वो 12 रबीउल अव्वल हो, चाहे वो New Year's हो, चाहे वो कुछ भी ओकेजन हो इस तरह का, हमेशा हम लोग लाइक अपने अब्बा के साथ लाइटें देखने जाते थे बचपन में. लाइक लाइटें देखने जाते थे, फायरवर्क्स देखने जाते थे. तो आई थिंक मेरी तो अच्छी जो मेमोरीज है सारी वो वही वाली है. एंड wholesome memories. And every single time I have also like planned a party or have like had like more people over at my place, but वो मज़ा नहीं आता because कोई ट्रैफिक में फंसा हुआ है, कोई किसी और पार्टी में फंसा हुआ है, कोई किसी और दोस्त के घर पे है. So it's just never fun to coordinate and everything. You don't want to start your year full of chaos. So it's nice to start it peacefully and you know. भैया मुझे तो नहीं बुलाती तुम कभी. I
haven't been doing anything recently. मेरा I think वो age मेरी चली गई है where I wanted to like just have everybody over and party all night. Now I'm just like, Stay in, watch yeah, I'm something. gonna wear my pajamas. I'm gonna watch a nice movie. I'm gonna maybe like call up a few close friends and wish them a happy new year. And I think that's it. That's fun for me. Have you ever had New Year resolutions? Who doesn't? Like, मैंने आई थिंक ज़िंदगी में एक दो दफ़ा ही किए होंगे बट आई हैव नेवर फॉलोड थ्रू और मुझे बस थोड़े सिली से लगते हैं. yeah, What I've do you also think? had that transition where my resolutions have now just translated into delusions. So I no longer call them resolutions. I just call them delusions because that's what New they Year are. delusions. I like that. I like that Yeah, word. New Year delusions. I think that should be commissioned. Yeah, I think Yeah. that's what we're naming this video. Yep. Okay, Yep. so what New Year delusions have you had? एक तो हर साल हम लोग जो है वो न्यू ईयर्स के ऊपर रेजोल्यूशंस बनाते हैं एंड आई थिंक एक तो सबका कॉमन होता है एंड स्पेशली आई थिंक मेरे लिए तो हर साल कॉमन होता है दैट आई हैव टू लूज वेट आई हैव टू ईट हेल्दी आई हैव टू एक्सरसाइज मोर आई हैव टू प्रे मोर आई हैव टू जस्ट बेसिक माई रेजोल्यूशंस आर ऑलवेज वेरी बेसिक बट सबसे डिसअपॉइंटिंग बात यह है कि इतने बेसिक रेजोल्यूशंस होने के बावजूद आई नेवर फॉलो थ्रू दैम एक्सेप्ट फॉर दैट 1 वीक of January, the first week of January. उसके बाद रात गई बात गई हो गया क्या न्यू ईयर क्या delusion क्या resolution. I just return to my old ways. Yeah, so I read that fitness and health related resolutions are actually the most common. Like 40 to 50% people have those resolutions. But around 20% people wish for like making more money or and stuff. But That's what I want my 2026 resolution to be. yeah, dollar bills. Making more money. I think everything else I know I'm never going to do, but I can aspire to be a little richer than I am. Yeah. Or to be just rich. And they say that 1st January or like the first week of January के अंदर सबसे ज़्यादा gym memberships होती हैं. Yeah, I also read that up के gyms are filled with people. 1st January से लेके I think एक हफ्ते तक gyms are full packed and then it goes down basically. Yeah, and then उसके बाद they say कि फिर मार्च के अंदर सबसे ज़्यादा cancellations होती हैं because people start in Jan they're like हाँ हम करेंगे एक दो हफ्ते जाते हैं फिर they're like अच्छा थोड़ा सा break ले लें फिर मार्च तक उनको realize होता है कि ये हमारा delusion था हम नहीं करने वाले तो ये भाई cancel करो. Exactly. Hence New Year's delusion. खैर some people love celebrating New Year's, some people are out partying, full countdown वाली stories लग रही होती हैं, शशको वाली stories लग रही होती हैं, having the time of their life. एज इफ के ये यही रात है बस न्यू ईयर्स पे अगर ना पार्टी की तो हमारा तो ईयर ही अच्छा नहीं शुरू होगा. I agree and I think because of social media because अब तो हम बहुत ज़्यादा exposed है ना वेस्टर्न वर्ल्ड को भी और सब कुछ तो आई थिंक बचपन में ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था न्यू ईयर्स के ऊपर इतनी बिग डील नहीं होती थी. मोस्टली लोग ये करते होते थे कि दे वुड गो समवेयर एंड वॉच फायरवर्क्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट्स लगी होती थी रोड सजी हुई होती थी तो वो देखने के लिए चले जाते थे. बट आई थिंक विद द एक्सपोजर ऑफ सोशल मीडिया अब देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर to celebrate New Year's and I think सिर्फ New Year's के लिए नहीं जिस तरह Christmas हो गई Halloween हो गई. I know it's not that relevant to this side of the world. Yes, there are people who celebrate like Christians and all of that. They do celebrate it. But हम लोगों पे भी बहुत pressure होता है कि अब हमने to keep up with times we have to celebrate and then एक चाहे मैं जितना डिसाइड कर लूँ और इसी प्रेशर के अंदर सोशल मीडिया के इवन इफ आई डिसाइड टू जस्ट स्टे इन एंड रिलैक्स विद माई फैमिली एंड फ्रेंड्स जब मैं अपना इंस्टाग्राम खोलती हूँ एंड आई लुक एट दैट वन स्टोरी और एक्चुअली नॉट वन thousands of stories of people just having the best time of their lives on New Year's. Like किसी के घर पे पार्टी चल रही है, किसी के घर पे डिनर चल रहा है, कोई किसी vacation. A lot of people also travel a lot during New Year's. Yeah, by the way, spend it abroad. ये नया शशका है वैसे. Someone told me कि they always go to Dubai for New Year's and I was like what is this level of posh के यहाँ मुझसे तो यहाँ नहीं मनाया जाता लोग दुबई जाके न्यू ईयर्स मनाते हैं. I know, कहाँ man, करते हैं. like, So that's some the people life. really go for it. Yeah. Fun fact, a friend of mine, she met Karan Johar last year when she went to Dubai on New Year's. I don't know what she will do with that information. बट अब मतलब मैं जब छोटी थी मैं क्या मतलब
मैं अपनी अम्मा को क्या समझाऊं कि अम्मा मैं न्यू ईयर्स मनाने जा रही हूँ, कहेंगी ये तो वैसे ही फरंगियों का होता है, हमारा तो हराम. इस्लामी न्यू ईयर होता है हमारा. तो आई जस्ट नेवर डिड एनी सॉर्ट ऑफ दिस थिंग. So talking about New Year's delusions, what are some of yours for 2026? They're not delusions, Mariam, they're resolutions. I do have them this year. Number one is this year I will stop pretending like I'm chill. I'm not. Ooh, that's a good one. For me, I think I will fake it till I make it. I think that's one thing that I've learned कि जितना आप fake करते हैं उतना आप make करते हैं. So that's what I'm gonna do. Deep, deep, deep. Yeah. My turn. So this year I will trust my gut 100%. Like my gut has anxiety, but फिर भी I will trust it. I'm gonna stop spending a lot of money, except when I'm like a little sad, or when I feel happy, or when I feel like splurging. Mariam, I think this year your aim should be to talk less and listen more. That's my resolution every year. But unfortunately, I try to act very graceful and poised and, nice. But that's just Really? who I You're am. trying? Yeah, You're I'm trying. I try every single time, but it just doesn't happen. And I've realized that, yeah, I'm going to be more unabashedly myself. I think I'm already like that, but I'm going to do more of it and not think Lean twice. into it. Yeah, I'm going to really lean into it and not think twice about just being who I am, whether it's loud, whether it's I talk too much. That's just what you get. So either take it or leave it. This girl means business. Business. Yeah. On a serious note, this year I also want कि मैं जरा अपना screen time कम करूँ. Oh, And I yes. get into like reading or like some other stuff. What a great time to start a podcast when you're trying to limit your screen time. Amazing. This is the only reason why I have more screen time. I This know. podcast. Aisha, how often do you go and like check the podcast page Not or that the often Instagram because page? every time I open the page, I don't have any notifications because इसने already check कर ली होती है. So I'm there before she is. Yes. So not that often. Yeah, and like it's not even like we're getting a lot of notifications, but I don't know why I'm checking my Instagram. Like I feel like, so this is another delusion that I have, not related to New Year's, but every single time I open Instagram and I go to the Last Braincell page, I always feel कि एकदम से कुछ हो जाएगा and overnight we will have like, oh my God, Aisha, we've gone viral. We're But that manifesting moment it. is just not happening, guys. Please like, share, subscribe, comment. No, Mayim, that'll happen. We're manifesting it. Yeah, and अच्छा, until it does, we will fake it till we Yeah. make it. You know, on manifesting, पता नहीं थोड़ा off topic है again, but जब मैं बचपन से लेके ना, I have pretended like I'm doing interviews. Have you ever done that? I've always been on the other side that I'm giving interviews. हाँ वही मतलब Yeah. लोग like मैं किसी शो पे like जिमी किमल पे बैठ के मैं Exactly, इंटरव्यू दे रही हूँ और मैं exactly. सोचती हूँ Yeah, कि yeah, मैं yeah. कैसे बात करूँगी, मैं कैसे हंसूंगी, मैं like बड़ी विटी से जवाब दूंगी जब वो मुझसे पूछेंगे. और मैंने ये भी सोचा था कि अच्छा मैं पाकिस्तानी हूँ तो मुझे ज़रा like accent मैं कोशिश करूँगी कि ना ही मारूँ Oh my ताकि God, मैं that's प्रियंका deep. चोपड़ा ना लगूँ, like इस टाइप की चीज़ें मैं full सोचती थी. तो I think this podcast is a small manifestation of that, जिसमें सिर्फ मैं और तुम ही पूछ रहे हैं एक दूसरे से, but that's good enough. I know it's such a I'll take that. therapeutic space for me. I think it's just like पूरे week की जो भी मेरी frustrations होती है, I just channel it through this podcast. So it's just at the end of the day helping us, Yeah. none of you. It's bharas. It's total bharas. bharas. That just comes out. Yeah. But also, guys, do tell us what New Year resolutions do you have? Comment down below. Comment down below. Yeah. And what are the stupidest resolutions that you've heard from people? Yeah, my favorite part also about this holiday season, as we call it, are all the holiday movies, like those really nice, cozy, romantic holiday movies जो आती हैं हर साल about Christmas and people, and obviously most of them are like Hollywood, but it always shows कि Christmas पे मिले and then the Christmas miracle happens and there's like a good looking guy and this really pretty girl and they're just like they meet each other, there's something that happens, like पहले थोड़ी सी hatred से start होता है and then it just develops into like really deep love.
love. So I think enemies to lovers. that's really fun for me. या एंड मुझे ना वो क्रिसमस वाइब वैसे बड़ी क्यूट जो मूवीज में Yeah. दिखाते हैं कि बर्फ पड़ रही होती है एंड लाइक वो पीछे जिंगल बेल्स टाइप गाना लगा होता Yeah, है एंड so लाइक बच्चे sweet. भाग रहे होते हैं एंड देन देयर इज अ ट्री आई रियली लाइक द क्रिसमस वाइब but there are some people who, I mean, of course, if you are from the Christian community or if you have friends and you're celebrating it, perfectly fine. But मुझे थोड़ा अजीब तब लगता है या I find a bit hypocritical when like these posh people or like these celebrities ये पूरी like Christmas celebrations करते हैं when they don't celebrate हमारे like Eid type चीज़ें with just as much enthusiasm, but because Christmas is like a white people or like a Western festival, Christmas and even Thanksgiving, ज़रा Yeah. मुझे थोड़ा pretentious सा लगता है like अच्छा क्रिसमस फिर भी समझ में आता है बट थैंक्सगिविंग पाकिस्तान के अंदर मतलब एंड स्पेशली turkeys बन रही होती है टर्कीज वो टर्कीज नहीं वो चिकन रोस्ट चिकन बन रही होती है घर के ऊपर उसको टर्की बोल रहे Exactly. होते हैं बट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो हैव यू नो क्रिश्चियन पीपल इन देयर सर्कल्स हाँ. एंड स्पेशली इन द मीडिया इंडस्ट्री देयर आर सो मेनी क्रिश्चियंस एंड Hindus, so you also see them like this year Diwali in Pakistan I think was really big. Like you saw a lot of celebrities doing these grand Diwali parties and dinners at their place. So I think it also has to do with कि आपके फ्रेंड सर्कल में कौन है या किसी एक आध ने कोई क्रिश्चियन है हिंदू है तो obviously you want to celebrate with them. But I think a lot of it only has to do with pressure from the Western world. Yeah. Because they've made it into इसको भी उन्होंने इतना capitalize कर लिया है. They've made it into a made these events into money making events कि now I think पूरी दुनिया पे ये pressure होता है and everybody just wants to catch up to that vibe of Christmas and you know like all the feels and Diwali and all of that. So I think there's a lot of influence from that also. Yeah, I agree. Like again, no problem if you have friends Yeah. जो minorities हैं and then you're celebrating with them. मगर अगर आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि मैं कितना कूल लगूंगा या मैं Yeah. कूल लगूंगी कि मैं थैंक्सगिविंग मना रही हूँ तो that's pretentious, very pretentious. And even if you're celebrating, for example, this time when Diwali came, I saw कि a lot of Pakistani celebrities, it's okay to celebrate it. I mean, there's no harm in it. If you have friends and family who are, you know, from the other religion and they celebrate it, you celebrate it with them. But what's this thing of putting like bindiya and like sindoor and you're not even like Hindu. अच्छा, I haven't seen that. I've seen that. Like अभी एक बहुत बड़ी एक party हुई थी. I wouldn't name people, but there Do were a it. bunch of celebrities there, designers, models, celebrities, and they're wearing like Indian saris and like appropriating their culture and wearing bindis and all of that. So that's a little too much. Like, Yeah. इतना भी नहीं मतलब celebrate कर लो, but it's not Halloween. You're not playing dress up. Yeah, unfortunately, I also think कि ये इसलिए होता है because हमारे अपने कोई local festivals रह नहीं गए हैं. हमारे जो Yeah. सारे festivals हैं they're all religious festivals. सिर्फ हम Yeah. ईद मनाते हैं, कायद आज़म डे मनता है हमारा, उसके अलावा सारी जो हैं they're like ये like defense day related इस टाइप की चीज़ें, Yeah. but we don't have कोई local festivals, which is really sad because it just goes to show कि हमारा जो culture है वो कितना like develop ही नहीं हो रहा है actually और regress कर रहा है because when we were young तो बसंत होती थी which was Yeah. a local festival. And it Basant used is, to by be the way, so making a nice. comeback in 2026. I've Yeah, heard. I don't think so because they say every year, but then वो यही होता है कि last minute पे they cancel it, and खैर for good reason, unfortunately, Yeah. some people really abused it. But it used to be so nice. फूल होते थे हर जगह, पतंगे होती थी, वो एक कमाल vibe होती थी. But आहिस्ता आहिस्ता करके, I don't know if this was deliberate by people और या बस naturally ऐसा हुआ कि सारी जो sense of community है वो आहिस्ता आहिस्ता erode कर देते हैं by taking out these festivals. तो फिर यही फिर अंग्रेज़ों के ही मनाएंगे हम और क्या करेंगे, हमारा अपना तो कुछ भी नहीं है Yeah. रहा तो. But you know, there's a reason why Pakistan is the happiest country in the world. Who says? It is the Who happiest. says? It is like number one on the happy index. No, I mean, it's not. Isn't it? No. I mean, I It's think like, हर I think साल वो कोई Sweden survey या कुछ होता है. है. Okay, my No, facts bro. might not be correct, but somehow चाहे कोई भी holiday हो, we find a way to celebrate it. Like चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो 14 अगस्त हो, चाहे वो न्यू ईयर्स हो, हमारे मन चले हर हॉलीडे के ऊपर आपको बाहर नजर आएंगे. एंड sometimes आपको गुस्सा भी आता है बिकॉज रश होता है एंड लाइक बदतमीजियाँ हो रही होती हैं, बट आई काइंड ऑफ डिग दैट वाइब ऑल्सो. लाइक आई थिंक दैट्स द वे टू हैव फन इन लाइफ.
पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मज़ा उनको ही आ रहा होता है. दे आर एंजॉइंग देयर लाइव्स, दे आर हैविंग अ ग्रेट टाइम, एंड आई थिंक आई लिव वाइकैरियसली थ्रू देम ड्यूरिंग Yeah. these holidays and these But events. तुम पक्की वो like you look that like the person who would really enjoy the halla gulla. I love it. I want to go and join them, but of course I can't. I Or think you maybe I can. can. I think you can. So मेरी फैमिली में भी मेरी जो बहन थी वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी है तो उसको भी बहुत शौक है कि मैं ये बस रश में जाके हम फंस जाएं कहीं पे एंड Yeah. मैं कम्प्लीटली ऑपोजिट आई ऑलवेज गेट सो एंग्शियस खैर अब तो आई एम ओल्डर बट एज अ चाइल्ड आई यूज्ड टू गेट सो एंग्शियस बिकॉज ऑफ दीज बदतमीजीज जो तुम Oh, कह रहे हो कि लड़के wow. आर आउट ऑफ कंट्रोल देयर नो लिमिट्स लोग गाड़ियों के अंदर घूर रहे होते हैं चीज़ें फेंक रहे होते हैं इट्स Yeah. टेरेबल तो No, that's of course मुझे terrible. हमेशा इससे एंग्जाइटी होती थी और मेरी बहन को होता था कि नहीं फंस जाएं हम कहीं रश में जाके फंसा फंस दें जाए, गाड़ी बस फंसा दे हाँ गाड़ी को. बट ये आई थिंक अच्छी बात है कि होना नहीं चाहिए, तो इस तरह की बदतमीजियाँ होनी नहीं चाहिए. और मतलब इवेंट्स वगैरह की सेलिब्रेशन की एडवांटेज लेके यू शुड नॉट जस्ट टेक इट एज अ वो कि अच्छा अब तो कुछ भी हो सकता है. आप किसी को चलती फिरती औरत को, लड़की को कुछ भी कह के चले जाएंगे या कुछ भी कर देंगे इन द अम्ब्रेला ऑफ सेलिब्रेशन और मस्ती और हल्ला गुल्ले का माहौल है. ऐसा नहीं हो सकता. बट आई काइंड रियली रियली डिग दैट वाइब अ लॉट ऑफ टाइम्स बिकॉज अब आई जस्ट फील कि हम लोग जितने बड़े होते जा रहे हैं, especially people in our circles, even if we meet for like parties, we meet for dinners, it's all very formal. I feel it's gotten very formal. We actually don't have that kind of fun where like दिल से आपका दिल हंस रहा होता था, Why is that? वो जो हंस हंस के मतलब पेट में दर्द होता था. I just haven't felt like that in a really long time. Why? I think because now whatever we do, because of the kind of people that we're around and how how we've grown up and in the environments that we're in, we try to be very formal. बहुत ज़्यादा aesthetics के ऊपर जो है वो फोकस होता है. जिस तरह अगर मेरे घर पे कोई दावत है, ठीक है, एंड क्लोज फ्रेंड्स से बियॉन्ड अगर एक्सटर्नल सर्कल भी आ रहा है, फैमिली फ्रेंड्स आ रहे हैं, सो अ लॉट ऑफ टाइम आई वुड स्पेंड ऑन दी एस्थेटिक्स ऑफ थिंग्स कि हाउ इज़ माई डाइनिंग टेबल लुकिंग लाइक, मेरा घर कितना साफ है, मैं क्या खिला रही हूँ उनको, कितना उसमें मतलब कितनी अच्छी क्वालिटी का वो खाना है, कहाँ से केटरिंग होगी, कहाँ से डेकोर होगी. वी स्पेंड सो मच टाइम ऑन एस्थेटिक्स ऑफ थिंग्स कि हम आई फील लाइक वी स्टॉप एंजॉइंग आवर सेल्व्स. बिकॉज हमारी सारी एनर्जी उसमें ड्रेन हो जाती है. बाय द एंड ऑफ इट जब मेहमान आते हैं एंड यू आर सर्विंग देम, उसके बाद आप इतने ड्रेन्ड होते हैं दैट यू हैव नो एनर्जी टू जस्ट सिट एंड टॉक. आई रिमेंबर दोज नाइट्स वेयर ईद के ऊपर हो गया या न्यू ईयर्स के ऊपर भी हो गया, कजन्स आए हुए, हम पूरी पूरी रात जाके बस पागलपना करते रहते थे. लाइक फैमिलीज, फुप्पोज भी बैठी हुई हैं, चाचास भी बैठे हुए हैं, and everybody's just having a great time. Like, and we would stay up till like 4 a.m. in the morning and just chill basically and have fun. Yeah, because responsibility कोई नहीं होती थी ना तब. Exactly, yeah. Have you seen those memes? And I'm sure तुम्हारे साथ भी हुआ होगा कि जब आप छोटे होते हो एंड कोई फ्यूनरल होता है तो एक जगह लाइक फुल सैड माहौल होता है, लोग रो रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, एंड देन एक कमरा हमेशा होता है जिसमें सारे बच्चों को डंप कर देते हैं और उस कमरे में बस वो धमाल और हंगामा हो रहा होता है एंड बच्चे डांस कर रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं एक दूसरे को और फ्यूनरल चल रहा है. हाँ, फ्यूनरल चल रहा है. Yeah, that's a core memory. I remember. यार अच्छा मुझे बताओ कि न्यू ईयर्स के ऊपर why is there always this one person on everybody's friends list who becomes a philosopher at midnight? Like हमेशा वो एक बंदा होता है जो कि पूरे एसेज लिखता है कि 2024 has taught me this और मैंने ये सीखा and I've worked on myself and in 2026 I want to do this, do that. And nobody follows and we know, I think उसको खुद लिखते हुए भी पता होगा कि भाई मैंने इसको कक फॉलो नहीं करना आगे, लेकिन लंबे एसेज आएंगे एंड स्टोरीज ऐसी आएंगी कि जैसे कि बस अब तो जिंदगी बदलने वाली है. आई थिंक कि वो किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होता. Maybe. I think that's the only reason because I think at this point we all know कि कुछ भी नहीं होना, कुछ change नहीं होना, सब कुछ वैसा. It's just a day, guys. It's nothing new. Just a day. It's just a day. I think if you want to improve yourself तो आप कभी भी शुरू कर सकते हो. Yeah, it can like round it off to Monday. You can always start from Monday. That's what I do every single time. When you start a diet और फिर एक दिन खराब होते थे तो आप कहते चलो अब मैं अगले मंडे से स्टार्ट करेंगे. सेल्फ इम्प्रूवमेंट इज अ प्रोसेस. यू शुडंट लिमिट इट टू अ डे कि मैं इस साल ये करूँगा. इमेजिन अगर आप लाइक राउंड ऑफ करने लग जाओ टू द ईयर, लाइक 5th January को आपको ये तो साल निकल गया, मैं अगले साल I think I've actually done that with a lot of things. अब तो गाड़ी छूट गई. अब बस अगले साल ही होगा जो होना है. Aisha, did you do the Spotify rap thing?
I haven't checked actually. Let me check. So the single most depressing thing about the end of 2025 was Spotify Wrapped. क्यों? Dude, मुझे लगता था कि मैं एक बहुत ही cool इंसान हूँ और मेरा बहुत ही अच्छा taste है in music, very cool, very nice, very chic. But my top artist was Preetham. So Mariam, is it surprising? I Is mean, it surprising your music taste is not cool? I still think it's pretty cool, but I'm really disappointed that it's Preetham. But deep down in my heart, I know that it had to be him because तुम कभी स्टोरी पे लगाती हो ये I never do because every year मेरा ऐसा ही होता है कुछ सबके आ रहे होते हैं पेंडू सा EDM trance and फलाना किस्म का trance and I'm just like desi. What's your top genre? Desi. And अच्छा, who's your top artist? Preetham. let's check each other's. तुम Okay. अपना देखो मैं अपना देखती हूँ. Alright. I haven't checked mine yet. Okay, first, how many minutes have you listened to? Not that anyone would care. Like, I have these people listened to really don't care. 25,000 minutes, which makes it 17 days. How much is yours? 0.7 days. Are you serious? Yeah, I barely listened to music this year. Oh wow. I Yeah, listen to I'm music mature. all the time. Like in the car, at work, while I'm falling asleep, when I'm cooking. I just can't. मेरे कान में ना खाली आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती. Something should always be playing, whether it's my own voice, but something should constantly be Try playing. thoughts. Yeah, I don't want to be. I don't like being alone with my thoughts actually. So. Actually, mera top genre is also desi. Oh really? Yeah. Wow. I thought you were I cooler listen than to me. but But mera turns out you're not as cool, Aisha. excuse me. Excuse you. प्रीतम तो मेरा नहीं है, मेरा एटलीस्ट पाकिस्तानी है. यार मतलब सबके इतने cool artists जो है ना सबने अपने top artists लगाए थे अभी I think around 2-3 weeks ago and सबके artists के album covers are so nice and artistic and designy and they're wearing nice clothes and मेरे पे you see and then Uncle Preetham. Uncle Preetham ना यूं होते हुए आ रहे हैं Spotify पे गोल घूमते हुए and I was like damn and he's not even wearing a cool outfit he's just wearing like a suit We and should he's put it wearing yeah somewhere put it here. here like put it here and I was like यार ये मेरा पेंडा ही आना था कोई ना कोई and also another interesting thing so my top song for Spotify 2025 was actually not the song that I love the most or I listen to the most it is the song that comes after the song that I listen to the most because I have not like made a playlist for myself. I'm so lazy कि मैं कभी playlist नहीं बनाती and every single time I listen to my favorite song उसके automatically बाद वो एक गाना है जो आता है and that is my top song in नहीं my बट list. वो वाला जब उससे पिछला है वो क्यों नहीं टॉप सॉन्ग में है? I don't know why because probably that one keeps repeating. I don't know what the logic is, but it's not the song and I know it for a fact because every single time that other song used to come up afterwards, और मुझे होता था यार ये क्यों लग जाता है? It just like ruins my vibe after my favorite song. But somehow that song is my number one song, which is really really sad because that's not a song that I like. That's okay, Maria. Yeah, I'm It's okay, sad. you know the truth. That's all that matters. Yeah, guys, I'm still cool even though I listen to Preetham. But Okay. I know for a fact everybody else also does. So my top artist is Hassan Rahim. I Wow, kinda- I'm so different. Yeah, you're so different. I'm like so edgy. हाँ बाकी भी like normal. So there used to be a time जब मैं बड़ा like like indie. I listened to like indie stuff. Yeah. Now it's super mainstream, super pop. Like my top artist Hassan Rahim, Billie Eilish, Bayan, The Weeknd. Yeah. I think 2025 में I will make this resolution that I have to listen to cool artists so that मेरे Spotify 2026 की list में at least Preetham भैया ना है. Like it should. I cannot handle another year of Preetham. That's a good resolution. Yeah. That's a good starting point. Yep. अच्छा मरियम तुम मुझे बताओ give me feedback like what do you think my next year's resolution should be? You're so perfect already. I don't know what to say. Yeah, I'm you're so touched. I'm perfect, touched. man. You're perfect, girl. Tell but my I think husband. you can use a little bit of patience in your life. That is true. You That is true. I think you make up your mind about things very quickly and you're not patient enough. So, yeah, if I had to pick one thing, I would say that be a little bit more patient. Okay. What about me? I think your first resolution should be कि तुम swimming सीख लो. Oh, yes. Please दुआ करें सब मिलके Irfan swim coach. Irfan swim coach. Work on this Thank girl. you. Shout out to Irfan swim coach for liking and reposting every single video. Yeah. And I owe you that becoming a good swimmer.
Yeah. And what else? I think I know what you're gonna say. what? Just say it. I know it in my heart what you're gonna say. उसके अलावा I think that you should talk less and listen more. That's true. That's true. I think that should not be a delusion. It should be my actual resolution. I need to, and I have that intent, yeah. I always have that intent, but somehow, whenever I'm in a conversation, whether it is on this podcast or whether it is in real life or, with my family and friends, I start off telling myself always, okay, you have to listen more, you have to talk less, you have to give people time and listen to them. But somehow, in the middle of the conversation, लोग boring हो जाते हैं. I just feel I do it because other people get boring, and then I'm just like, okay, now I need to take over. But that is also one thing in my life Take that I over. need to fix. I can't fix everything. So that's something I need to fix. Yeah. Let things go. I can't think of any more for you. I just feel you're a very nice, balanced kind of human, and Thank you, Mayu. yeah. But I have a goal for us also. I want Yeah. कि हम next year हम छते फाड़ दें इस podcast के. Oh, of course, that goes and without saying. and like we're recording this right now, and next New Year's we will record a video again, and तब तो हम like celebs बन चुके Of होंगे. course, guys, please. And तब तो मतलब हमारी league ही और होगी ना. So this Yeah. is our resolution also, to become biggies. Bigger and big more podcasters. successful with this podcast. Yes, I think I want to manifest right now that next year के अंदर, hopefully, I think the next episode we will record would be in the next year. So I really want to manifest a nice guest for the podcast. That is true. Yeah, that's Guys, gonna be our first check for the next year. We should. Guess in the comment section, like people ever comment. Guys, please start commenting on the podcast and guess who's gonna be our first guest on the Or pod. tag people that you want to Even better. get on Yeah. our show. उनको tag करें, तंग करें उनको, ताकि maybe वो हमें देखें and they're like, who are these cool girls? We should work with them. Yeah. So And like, share, subscribe, comment, hit the bell icon, share it on your stories, repost it. Just do it. do it all, guys. Bye-bye. Bye.